welcome. You're watching Morning Markets on Money9. I'm Sakshi, Batra, and this is where we give you all the key updates you need to begin your trading day right. तो चलिए शुभारंभ करते हैं हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सत्र का। सबसे पहले जानेंगे कि हमें हैंडओवर क्या मिला है इंडियन स्टॉक मार्केट से, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आज के ग्लोबल मार्केट से संकेत किस तरीके के मिल रहे हैं, इस हफ्ते का ट्रेड किस तरीके से देखने को मिल सकता है। फ्राइडे का सेशन काफी फ्राइटनिंग था इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि एक शार्प फॉल हमने अक्रॉस द बोर्ड सेल ऑफ के साथ देखा था भारतीय मार्केट्स में। अगर आप देखेंगे तो 50,000 के नीचे फिसलता हुआ सेंसेक्स नजर आया। ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स की यहां पर गिरावट थी, और आप देख सकते हैं कितना शार्प फॉल है परसेंटेज टर्म्स में। 3.8% तक की गिरावट हमें सेंसेक्स में दिखी। सिमिलर तौर पर निफ्टी में भी इंडिकेशंस देखने को मिले थे, और 14,529 के लेवल्स पर निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। एक समय पर 14,400 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो कि लो इमीडिएट हो चुका है ट्रेडर्स के लिए वॉच आउट करने के लिए आज के ट्रेडिंग सेशन में भी। अगर वो लो सस्टेन हो जाता है और दोबारा से बाउंस बैक आता है, जो कि रैली सस्टेन करती है, तो एक बार फिर उम्मीद की जा सकती है कि जो बुल ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन देखना होगा कि किस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स के संकेत हैं। अगर आप निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पेन इस इंडेक्स में फील होता हुआ नजर आया। करीब 5% तक की गिरावट 34,803 के लेवल्स पर निफ्टी बैंक बंद हुआ, यानी कि पिछले हफ्ते में ही ना ही केवल 37,000, 36,000 और 35,000 के लेवल्स भी ब्रीच होते हुए नजर आए हैं नीचे की ओर। तो काफी शार्प गिरावट इन द लास्ट वीक इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन। बट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्रॉडर मार्केट indices, of course the pain was also felt in these two indices. However, it was lesser than the benchmark indices. When you talk about the mid cap index, there was a sharp fall of 1.8%, but the small cap index did better with 0.74% of losses on Friday. Moving on to see what are the factors that will be important for the markets to track today. Remember, even after the market hours on Friday, we got very important macro numbers, as well as movements in the global markets as well. First, you see that the US House of Representatives have passed the $1.9 trillion COVID-19 aid package over the weekend, and the bill now heads to the Senate as well. So there is finally movement on that, and this was an anticipation that has been triggering the markets globally also in the past few days as well. Now the yields, the bond yields, which actually have put all the pressure on the global indices and on the Indian markets as a reflection as well, that had risen quite sharply on Friday, and which is why we actually saw global market sentiment completely dent over. But we are seeing some abating on that sharp rally, and they have stood at around 1.4%, and the settlement at around this percent may actually augur well for the markets. They can actually heave a sigh of relief as well. Now Q3 GDP numbers also came out on Friday after the market hours, which were at 0.4%. However, there was an expectation of a higher number on this GDP number, but it has come a slightly lower. So immediately you may see that the markets will react to that. However, the good part is that the Indian economy is out of the technical recession, so that may also lend some support to the Indian markets. Remember, another factor that the markets will be tracking will be the FII flows. Remember that on the Friday we had seen a sharp sell-off from the FIIs. They had sold shares worth about 8,295 crore rupees. That's a sharp sell-off for a single day on Friday. We'll just have to see. These kind of things are very important to track for at least emerging markets and markets like India, because this so far in the last 6.5, 8 months, we have seen that foreign inflows and it's which have really supported the Indian markets. It's the liquidity driven markets. So in kind of such situations, whenever there is an FII sell-off, definitely the sentiments go down, because there is a fear of the reversal of the trend and the money not pouring in. So that's something that the markets will definitely be tracking in today's trading session. एक बार देख लेते हैं कि यूएस मार्केट से क्या कुछ संकेत आ रहे हैं। तो मिक्स ट्रेड यहां पर देखने को मिल रहा है। डाउ जोन्स में 1.5% तक की गिरावट थी। अगर आप देखें ओवरनाइट सेशन में S&P 500 में 0.5% तक की गिरावट थी, लेकिन नैस्डैक में काफी चॉपी सेशन के बाद एक रिवर्सल आया और 0.5% गेन्स के साथ यहां पर क्लोजिंग होती हुई हमें दिखी है।
एशियन मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो फिर भी काफ़ी फर्म्ड अप यहाँ पर जो ट्रेड है वो शुरुआत में देखने को मिला है। खास तौर पर जो काम रिटर्न हो रहा है बॉन्ड मार्केट्स में, उसका कहीं ना कहीं आप इम्पैक्ट एशियन मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स लास्ट वीक का जो वाइल्ड राइड रहा है यूएस बॉन्ड यील्ड्स में, उसका इम्पैक्ट तो मार्केट्स में रहा ही था, लेकिन ये जो कहीं ना कहीं सेम्बलेंस है, सेटलमेंट है, उसका इम्पैक्ट है। और साथ साथ पे ये जो कहीं प्रोग्रेस होती हुई नजर आई है यूएस स्टिमुलस पर, ये भी कहीं ना कहीं सपोर्ट लैंड करती हुई नजर आ रही है। 2.5% तक के आसपास की तेजी निकेई 225 इंडेक्स पे 29,641 के लेवल्स पर ये इंडेक्स अब ट्रेड कर रहा है। हैंगसेंग में 29,302 के लेवल्स आपको देखने को मिल रहे हैं 1.25% तक की मजबूती के साथ। और शंघाई कॉम्पोजिट में अगर आप देखेंगे तो आधे प्रतिशत से ज्यादा की तेजी है। तो जो क्यूज एशियन मार्केट से मिल रहे हैं वो डेफिनेटली यूएस मार्केट से बेहतर मिल रहे हैं। एसडीएक्स निफ्टी पर देखें तो यहाँ पर भी संकेत पॉजिटिव है, तो हो सकता है एक अच्छे गैप अप के साथ हम शुरुआत करते हुए नजर आए। 14,744 का लेवल इस समय एसडीएक्स निफ्टी पर देखने को मिल रहा है। तो तक करीब करीब आप देखेंगे कि इंडियन मार्केट्स में भी 200 अंकों का उछाल ओपनिंग लेवल्स पे देखने को मिल सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होगा ट्रैक करना कि यही लेवल आगे जाते हुए सस्टेन करेगा या नहीं, या कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्केट्स में आज हावी होते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मनी मार्केट में किस तरीके का मूव है। तो थोड़ा बहुत वीकनेस अब देखने को मिल रही है और 73.47 टू द डॉलर के हिसाब से रुपये इस समय ट्रेड कर रहा है 1.5% तक की वीकनेस के साथ, यानी कि कमजोर होता हुआ रुपया नजर आ रहा है एज अगेंस्ट डॉलर। मूविंग ऑन टू द क्रूड ऑयल मार्केट, सो यू कैन सी अ सी ऑफ रेड इवन हियर। There's a slight downtick on the Brent crude of 0.3%, $66.7 टू द बैरल के हिसाब से Brent crude ट्रेड कर रहा है। वहीं WTI क्रूड में भी अगर आप देखेंगे तो आधे प्रतिशत तक की वीकनेस है, $63.2 के हिसाब से यहाँ पर वीकनेस चल रही है। तो जो लास्ट वीक का शार्प हाई था उससे थोड़ी बहुत कमजोरी आ रही है, और अगर इसके आसपास सेटल होता है ब्रेंट क्रूड या फिर WTI क्रूड तो इंडियन मार्केट्स के लिए बेहतर माना जाएगा। लेकिन किसी भी तरीके का शार्प स्पाइक अगर यहाँ पर होता है तो उसे वॉच आउट करना बहुत जरूरी हो जाएगा। आगे मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज मार्केट्स सबसे ज़्यादा हाईलाइट में देखने को मिल सकता है। अगर आप देखेंगे ऑयल एंड गैस स्पेस से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर आप नजर रख सकते हैं। 3% तक की गिरावट हमें फ्राइडे के सेशन में दिखी थी। अब कंपनी ने ये खबर निकाली है कि कंपनी करीब 33,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने वाली है पानीपत रिफाइनरी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। ये एक अच्छी खबर हो सकती है और इसका इम्पैक्ट आपको स्टॉक प्राइस पर देखने को मिल सकता है। आगे बढ़े तो बीएल कश्यप एंड सन्स पर भी नजर रखिए। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी के अकेशिया 2 पार्टनर्स एलपी एंड अदर्स, दे हैव एक्चुअली रिड्यूस्ड द स्टेक इन द कंपनी टू 2.47% फ्रॉम 4.91%. So there was a sharp loss of about 5% in on Friday's trading session. You could see some bit of an impact on the stock even in today's trading session. Moving on to another stock, and that's Affle India. That was up about very marginally on Friday's trading session, but the company and its board meeting has approved the fundraising of about 1,080 crore rupees. So that may augur well for the stock in today's trading session. Moving on to Equitas Holding now, sharp fall of 3.5% seen on Friday, and the investor CDC Group PLC has reduced stake in the company from 7.84% to about 5.2%. So that's something to watch out for if that will continue to dent the sentiment in today's trading session for the stock. Moving on to another stock, and that is from the chemical space. Tata Chemicals is where you need to keep an eye out on. The company has done some management changes. If you see, they have appointed Nandkumar Tirumul as the Chief Financial Officer. So all of these changes might not have a significant impact on the stock price, but that's an important factor to know as to what kind of management changes have really happened on the company. Now moving on to Acrisil, now 1.68% of a jump was seen on Friday's trading session. The company has commenced the commercial production of additional 1 lakh units after the completion of capacity expansion of quartz kitchen sinks and at the Bhavnagar plant in Gujarat. So that's something that may augur well for the stock prices today. So watch out for that one too. Moving on to Reliance Industries, that stock was down about 2.8% on Friday. So heavyweight like that also had an impact on the overall fall in the markets on Friday. But Reliance Strategic Business Venture, as a subsidiary of RIL, has announced that it has raised its shareholding in investor company Skytrain Inc. to 54.46%. So again, something that you may have to watch out for in today's movement of the stock prices on Reliance Industries as well.
So that's as far as the stock, stocks to watch will be. But apart from this, a whole lot of stock recommendations have flown in from the technical experts on our channel. Aditya Agarwal believes that BEML is something that the traders can watch out for. If you want to initiate a buy trade on some stock in the space, then this could be a counter that you can watch out for a stop loss of 950 and target price of 1100 on the counter. Moving on to another stock, and that is Blue Star from the capital goods space. 4% uptick was seen despite the move that we had seen on Friday. So it was already quite buoyant, and that's something that you may find some buying trade opportunities. Stop loss you need to maintain on the stock would be 790, and a 950 kind of a target price is something that you can really expect. So there's a sharp upside that he expects on this counter in the positional days as well. Now, Indus Towers is something that again he believes that the reversal may happen from the 6% downtick that we had seen on Friday. You could actually buy this stock for a stop loss of 242 with a target price of 285. Remember, it was trading at around 257 rupees on Friday. So there's an upside of about 30-35 rupees that you can really expect on this counter as well. Now, Neerav Chheda believes that from the telecom space, it's Bharti Airtel that one must keep an eye out on for a buying opportunity. The stop loss you can keep on the stock would be 530 with a target price of 580. It was trading at around 557, and you could see a strong upside again on this counter too. Moving on to Hindustan Petroleum Corporation, again HPCL is something that you may actually go in for a buying trade. The target price for this stock is 260 rupees. That's about 20 rupees upside from the last trading price. The stop loss you need to keep at 230 rupees. That's 10 rupees downside of the current market price. Moving on to another stock that he has recommended, again from the oil and gas space. It is the performer of Friday for February for sure. ONGC has really jumped up quite sharply in the entire Fridays in February month. But if you actually see, on Friday, it fell about 6.5% in trade, but you could actually see a momentum continuation over here. The stop loss you can keep on the stock would be at 105 and keep a target price of 120. So there is still an upside of about 9 rupees that you can expect on the stock in the short run as well. So that's as far as the stock recommendations are concerned, and we'll leave you at that. But a whole lot of coverage on the market opening and beyond also continues on Money9. So stay tuned with us.